Good morning students. Welcome to St.Xaviers High School Article E classes. As we have completed our chapter number 2, the plant fairy. So, I expect from you all that you have written everything in your workbook. So, today we are going to start our chapter number 3, Water, O Water. As we all know that water is very much essential for our life and survival on the earth. So today we will learn about water through a poem. Water, oh water. This is water. I will wash my face with water, said Munna to his Nani. Now what is Munna saying to his Nani? Munna क्या बोल रहा है नानी को? That I will wash my face with water. We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. Now what is there in the first paragraph? In the first paragraph, he is saying quench. Quench means thirst of water, means प्यास लगती है अपने को. Quench means that. किससे बुझती है प्यास? Water से. फिर हम सब क्यों जिंदा हैं? We all are alive because of water. Water has been us for ages. हमारे साथ water ages से ही चलता आ रहा है. Its story can fill so many pages. If we write the story of water, it will fill so many pages. Somewhere it is dew, somewhere it is snow. Steam is also water, as you know. Water has formed so many. That is what says my Nani. Now there are different forms of water on our earth, in the form of dew, in the form of snow, and in the form of steam. Says my Nani. Now Munna is saying, his Nani is explaining him there are different forms of water. In the dew form, in the snow form, and in the steam form. Now what is dew? Dew means, you can see, it is in the morning that we call o's. Okay, that is. Now what is snow? Snow, that is ice that fall on the earth in the form of rain. What is steam? Steam is that when we boil something, as you drink milk, yes, उसमें से धुआं निकलता है, that is the steam. वो क्या होती है? Last paragraph. The river flows, the waterfalls sings, and water swells in lakes and springs. Now the rivers are flowing, and who is singing? Waterfalls are singing, and swells in lakes and springs. Now what is the meaning of swell? The meaning of swell is to expand, to grow larger. Lakes expands and become ocean. Now life on earth, it has brought water, fields, and life they got. But when the water breaks in floods, great misfortune, it always works. Now what is written in the last stanza? Life on earth is possible because of water. But when the water expands, बहुत ज़्यादा हो जाएगा water, तो वो होता है floods. फ्लड्स हो जाती हैं और मिसफॉर्चून
मिसफॉर्चून, बहुत सी अनहैपनिंग अर्थ पे हो जाती है, बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है। This poem is written by Sri Prasad and he has translated from the Hindi to English. Now we will learn more about water, importance of water, sources of water and uses of water, and also the water cycle, how rain comes on the earth. First, importance of water. First point, all living things like human beings, plants and animals need water to survive. सब लोगों के लिए वाटर बहुत ज्यादा जरूरी होता है to survive. We, the human beings, plants, animals, everyone need water. Next point, about 70% of the human body is made up of water. हमारी बॉडी में 70% क्या होता है? वाटर होता है. देखो हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है. नेक्स्ट, about 71% of the earth is covered with water. 100 में से कितना परसेंटेज अर्थ वाटर से कवर्ड है? 71%. Next, water is necessary not only for drinking but also for our day-to-day life purpose. खाली पानी पीने के लिए ही काम नहीं आता है, हमको डे टू डे एक्टिविटीज में भी पानी बहुत काम आता है. इसके बिना हमारा काम पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट, वी कैन नॉट इमेजिन अ लाइफ विदाउट वाटर. वाटर नहीं होगा तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. नाउ वी विल लर्न sources of water. There are two sources of water. One is natural and one is man-made. First we will learn natural sources of water. The biggest and the main natural source of water is rain. पानी कहाँ से मिलता है हम सबको? रेन से मिलता है. अगर रेन नहीं आएगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. So the other natural sources of water are pond, lake, river, sea and ocean. Now some man-made sources of water. Man-made sources यानी जो हमने बनाई हैं sources पानी लेने के लिए. तो वो कौन कौन सी है? वेल, जो हमको कहाँ पे देखने मिलेंगे? विलेजेस में देखने मिलेंगे. एंड सेकेंड इज हैंड पंप. हैंड पंप भी कहाँ देखने मिलेंगे? विलेज में देखने मिलेंगे. ट्यूबवेल्स. ट्यूबवेल्स कौन यूज करता है? फार्मर्स यूज करते हैं टू फसलों को पानी देने के लिए. एंड नेक्स्ट इज टैप. यूजेस ऑफ वाटर. हाउ वाटर इज यूजफुल इन अवर डे टू डे लाइफ. जैसे मैंने आपको बताया था, अगर पानी नहीं होगा तो हमारी डे टू डे एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है. तो कौन सी डे टू डे एक्टिविटी में पानी की जरूरत पड़ती है? ड्रिंकिंग वाटर, फॉर बाथिंग, for cleaning dishes, for washing hands, for gardening, for cooking, for washing clothes and for swimming. Now we will learn about water cycle, the process of water cycle, how rain comes on the earth. There are different processes in this water cycle, so we will learn one by one. So when the rain comes, what you can see around all? We can see the greenery, the grass, everything we can see. Now we will learn the first process of the rain. The first process of the rain is evaporation. Now I will teach you what is evaporation. Evaporation. Evaporation क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा जब मम्मी गैस पे पानी गर्म करती है और जब वो पानी गर्म हो जाता है तो उसमें से क्या निकलता है? धुआं. वो धुआं कौन से फॉर्म में होता है? गैस फॉर्म में. और उस गैस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इवापोरेशन. इन द सेम मैनर इधर भी यही
रहा है। इधर सन गैस का काम कर रहा है और लेक्स और रिवर को हीट दे रहा है। उससे वो क्या हो रही है, गरम हो रही है। फिर उनमें से ऐसे क्या निकलता है, धुआं। तो ये धुएं को क्या बोलते हैं हम लोग, evaporation. The changing of water into a gas is called evaporation. Now second process कौन सा है, second process है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कैसे होता है, तो देखो आप जब भी आपके पास दूध का ग्लास है, वो बहुत गर्म है, अगर आप उसको ढक दोगे, फिर थोड़ी देर के बाद आप उसको देखोगे तो ढक्कन पे पानी होगा। तो वो पानी क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। चेंजेस ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। हियर वाटर वेपर मींस गैस। चेंज ऑफ गैस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये गैस किसमें कन्वर्ट हो गई, वाटर ड्रॉपलेट्स में। और इन वाटर ड्रॉपलेट से क्या बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे। क्या बनेंगे इनसे, क्लाउड। यू कैन सी हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द water droplets, with the help of the condensation. See, clouds have formed, and when clouds are full of the water droplets, वो भर जाता है ड्रॉपलेट से, वाटर ड्रॉपलेट से, तो क्या होती है, बारिश। देखो अब ये भर गया क्लाउड, तो अभी क्या हो रही है, बारिश हो रही है। See how it's raining. As this is the process of water cycle. In this way the rain comes on the earth. So you all understood what is water cycle. The first process was evaporation, the second process was condensation, and condensation की water droplet से क्या form होते हैं, yes, clouds form होते हैं। और फिर क्या होती है, बारिश होती है। तो हम सब क्या हो जाते हैं, हैप्पी भी हो जाते हैं, और चारों तरफ क्या हो जाती है, ग्रीनरी। तो आप सबको समझ में आया इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर, यूजेस ऑफ वाटर एंड द वाटर साइकिल। तो वाटर कितना जरूरी है हम सबके लिए। सो आवर चैप्टर नंबर 3 वाटर पार्ट 1 is complete. Okay.